Very good afternoon to all of you. Am I audible, visible, all clear? All clear? Sushant, Shivangi, Sagarika, Rajkumar, Varsha, Nivedita. केमती अछन समस्ते? How are you all? केमती अछन समस्ते? भल अछंती? प्रिपरेशन केमती चलची? शिवांगी गुड, ओके, बहुत बढ़िया. All good from my side. ठीक है. प्रिपरेशन केमती चलची? पढ़ापढ़ी केमती चलची? आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगेन आमे वाईटी प्लेटफॉर्म रे कनेक्ट करछे. बढ़िया चलची प्रिपरेशन. ओके. Now all ready from my side. ताले आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्ट करबा हमें. आज इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेबी. इंपोर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स रा करेबी. को लेवल ला क्वेश्चन करबा? इजी क्वेश्चन, मीडियम, मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस और डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. Now all ready from my side. आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन कोन करबा को? अपनी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेबी. इंपोर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स को टाइप रो क्वेश्चन करबा? लेवल ऑफ क्वेश्चन कोन रखिबा? व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ क्वेश्चन? गोटे मिनिट. कोन मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ऑल राइट. लेवल ऑफ क्वेश्चन हमें कौन रखिबा? लेवल ऑफ क्वेश्चन रखिबा मॉडरेट टू डिफिकल्ट. बहुत बढ़िया. ना मोर ऑब्जेक्टिव कौन? पाखा पाखी 80टा क्वेश्चन कि 100टा क्वेश्चन आज मु करेबी. मोर ऑब्जेक्टिव कौन मु कहि दोची? ये क्वेश्चन आंसर माध्यम रे किछि इंपोर्टेंट कांसेप्ट जणैबा होची मो ऑब्जेक्टिव. आज क्लास रे मोर ऑब्जेक्टिव होची क्वेश्चन आंसर माध्यम रे. यस, मिक्स लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर, डोंट वरी. What is my objective? My basic objective is to let you know, let you introduce with some concepts. प्रत्येक बीट रे ए बी सी डी प्रत्येक पॉइंट रे जेमति किछि कांसेप्ट लुचि कि थियो से वाला क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेबी. हैला. सो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर पर्यंत जेमति सब चैप्टर हमें कवर करथिबा से वाला क्वेश्चन मु आज प्रैक्टिस करेबी. हैला. तो प्रैक्टिस स्टार्ट करिबा. बुझी बुझी के करिवे, समस्त व्यस्त व्यस्त हेबेनी. आराम रे करिया, बुझी बुझी करिया. फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following factors are required for production of goods and services? ये फर्स्ट चैप्टर रो क्वेश्चन आसीची ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. टॉपिक कोन? टॉपिक होची फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कहि दोची एठी ओ टॉपिक रो क्वेश्चन आसीची फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नु एठी क्वेश्चन आसिला. तो एटी हमें कोंतु कोन हो?
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन केतेटा थिला मु टिके मन पकेतिबी चारिटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थिला कोन कोन ना लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ये चारिटा थिला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर चारिटा थिला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैला तो ये लैंड रहिला लेबर रहिला फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल ये कैपिटल भीतर आसी ताले कोन हो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो ताले कोन हो आंसर एठी आंसर हो ऑल ऑफ दिस कोन हो आंसर टिके कहि देबे समस्त आंसर हो ऑल ऑफ दिस एग्रीड बुझियला एक नंबर क्वेश्चन समस्त ताले नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें आसीबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये को टॉपिक रो आसिला क्वेश्चन टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया एथिरु मैक्सिमम क्वेश्चन आसे मन रखो ए टॉपिक रू मैक्सिमम क्वेश्चन आसीबो बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया सब टॉपिक आरबीआई ताले आरबीआई कोन आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक समस्त मन अछि कि नहीं आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक RBI is the banker to the government. Banker to the government हो कि नहीं RBI banker to the government. RBI foreign exchange reserve manager of foreign exchange reserve. Money printing रा दायित्व RBI पाखरे वो money सब money except 1 rupees notes and coin except 1 rupees notes and coin very important. एटा किए करे ना दिस इज बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिग्नेचर कार रे ना सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी हैला एवं आरबीआई रे सबटु इंपोर्टेंट काम कोन ना गोटे पॉलिसी आनंती मॉनिटरी पॉलिसी कि पॉलिसी केते प्रकार रे कहितली पूर्व मने थिबो की पॉलिसी अछि दी प्रकार रा पॉलिसी अछि गोटेला मॉनिटरी पॉलिसी गोटेला फिस्कल पॉलिसी गोटेला मॉनिटरी पॉलिसी गोटेला फिस्कल पॉलिसी ता कोन ना फिस्कल पॉलिसी जे आपनकर बजट व्हिच इज फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय हुम ना बाय आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी रा ऑब्जेक्टिव कोन मॉनिटरी पॉलिसी रा ऑब्जेक्टिव होउची मॉनिटरी पॉलिसी रा ऑब्जेक्टिव कोन ना मॉनिटरी पॉलिसी रा ऑब्जेक्टिव होउची टू कीप लिक्विडिटी कांस्टेंट लिक्विडिटी रो अर्थ होउची मार्केट रे केते अमाउंट रो करेंसी रहिबो कोन कहली मार्केट रे केते अमाउंट रो टंका रहबो क्वांटिटी ऑफ मनी केते रहइबो सेही अनुसार सप्लाई करियो कोन कहली क्वांटिटी ऑफ मनी केते रहइबो सेही अनुसार एठी सप्लाई हो बुझेला त कहला हम मॉनिटरी पॉलिसी नाउ फिस्कल पॉलिसी रे कोन देखुचंदी ना फिस्कल पॉलिसी रे हम देखुचन दिस इज अबाउट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रो रेवेन्यू ऑफ एक्सपेंडिचर कथा हम देखुचे एटी गवर्नमेंट रो रेवेन्यू केते होचे एक्सपेंडिचर केते दैट इज कॉल्ड बजट कोन कहूचे ताकू बजट बोली कहले बुझियला फिस्कल पॉलिसी बुझियला मॉनिटरी पॉलिसी बुझियला सो आरबीआई रो बेसिक फंक्शन हला कोन ना मॉनिटरी पॉलिसी एवं एठी जो गुडा कहल दीज आर इंपोर्टेंट कांसेप्ट्स रिलेटेड टू आरबीआई तले आरबीआई केबे आसिला के कहि परियो मते आरबीआई केबे आसिला आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई आसिला केबे आरबीआई एक्ट 1934 रिजर्व बैंक ऑफ को कमिटी रिकमेंडेशन आसिला आरबीआई के कहि को कमिशन रिकमेंडेशन आसिला तले क्वेश्चन को आसीबा ये गला बेसिक कांसेप्ट्स अबाउट आरबीआई में पढि दे क्वेश्चन को आसीबा हम क्वेश्चन को आरबीआई डिसाइड्स अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स कैन कीप विथ देमसेल्फ फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन 1950 आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड तीनटी कांसेप्ट देइची तीनटी डाटा देइची या भितर हमको देखियार अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कोन फटाफट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फटाफट कौन हिल्टन यंग कमिटी वेरी गुड आकाश
थैंक यू वेरी मच एब्सोल्युटली करेक्ट हिल्टन यंग कमिटी ना समस्ते नाउ liquidity रो कथा कहल द अमाउंट ऑफ मनी मींस दिस इज द लिक्विडिटी what is amount of money is liquidity now liquidity is decided by RBI correct financial sector in India is regulated by Central Bank of India this is by Central Bank of India or this is by Reserve Bank of India kono this is by Central Bank of India or this is by Reserve Bank of India कहा द्वारा बैंकिंग सेक्टर को किए रेगुलेट करे इंडिया रे in India it is regulated by Central Bank of India 1950 RBI was nationalized 1950 रे nationalized हला ना 1949 ने nationalized हला RBI 1915 रे हला ना 1949 रे हला then what is the correct answer only one is correct option कोड हला only one नहीं एटी देला क्वेश्चन which of the following statements is incorrect को स्टेटमेंट इनकरेक्ट दे देला एटा बहुत इंपोर्टेंट मैक्सिमम स्टूडेंट देखंदिनी करेक्ट किए इनकरेक्ट किए मैक्सिमम स्टूडेंट देखंदिनी करेक्ट देछि कि इनकरेक्ट देछि सो 2 आउट 3 इनकरेक्ट 1 इज करेक्ट हेगला क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर यस 2 3 सस्मिता इनकरेक्ट concept of economic territory differs from the geographical boundary of a country with reference to this which of the following can be included in India's economic territory को topic रू question आसिला एटी topic हैला national income topic कोन ना topic हैला national income sub topic हैला GDP मा को थीम रू question आसिला थीम हैला GDP ऊपर एटी question कला ताले को गुड़ाक इकोनॉमिक टेरिटरी भितर आसुची एटी के बुझाई देबी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखन जीडीपी रो कथा केते बेले आसे ना जीडीपी इकोनॉमिक टेरिटरी रे होतिबा प्रोडक्शन को कैलकुलेट करे बा इकोनॉमिक बाउंड्री रे होतिबा प्रोडक्शन को जीडीपी कैलकुलेट करे बुझ पाले मो कथा तुम को सर इकोनॉमिक बाउंड्री किए एटा जोडा देखथि एटा इंडिया रो ज्योग्राफिकल बाउंड्री मन कर इंडिया रो गोटे एम्बासी ऑफिस अछि यूएसए रे ना एटा इंडिया भितर आसीबो इंडिया रो जीडीपी भितर आसीबो मन कर एठी गोटे शिप जाउछि कोडी ओशियन ने गोटे शिप जाउछि ये इंडिया रो ज्योग्राफिकल टेरिटरी रे नाही किंतु ये इंडिया रो इकोनॉमिक टेरिटरी भितर आसीबो ये पाठ एया पतेरुछि तो एटू कांसेप्ट कोन आसे कांसेप्ट बुझंतु कांसेप्ट कहउछि कि इंडियन माने फॉरेन ने काम कले तो से माने फॉरेन नु टंका धरी इंडिया को पळे आसबे एवं इंडिया रे किछि फॉरेनर काम कले जो फॉरेनर काम कले से माने इंडिया रो टंका नै कि फॉरेन पळे तो इंडिया को इनफ्लो होउची एवं आउटफ्लो होउची देयर इज इनफ्लो ऑफ मनी एंड देयर इज आउटफ्लो ऑफ मनी इनफ्लो आउटफ्लो को माइनस कर देले मिले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और मिले नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रोड जेतोले जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे एटा को मिसई दियंती तेतोले हमको मिले जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कोन मिले जीडीपी मिसई देले मिले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज दिस क्लियर नाउ एई टॉपिक रो आसला क्वेश्चन एबे चारिटा ऑप्शन देखंतु आंसर करिवे ना आमे खाली क्वेश्चन आंसर करिवानी कांसेप्ट टा को पढिया कांसेप्ट कोन कहउची कोन कहले कांसेप्ट कोन पचार सेटा को पढिया क्वेश्चन देखो के आसुची ना द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल वाटर offices of international organization located within India, fishing vessel operated by Indian residents in international water, military bases of other countries situated in India. किए इंडिया रा इकोनॉमिक बाउंड्री भितरे आसीबो political boundaries of the country including its territorial water political boundary आसुच कोडा एटा जोडा मैप रे देखछो दैट इज द political boundary जोडा मैप रे देखुछनी दैट इज political boundary so it comes territorial water किए ना एई बाउंड्री रो
12 नॉटिकल माइल पर्यंत मन रखिए केते ना अप टू 12 नॉटिकल माइल दिस इज टेरिटोरियल वाटर दिस इज टेरिटोरियल वाटर हैला मन रखिए 24 नॉटिकल माइल पर्यंत दिस इज कॉन्टिग्युअस जोन 200 नॉटिकल माइल पर्यंत किए कहबे दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल पर्यंत दिस इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो ऑफिस ऑफ ये बुझीगला ताले एटा आसिला एक नंबर आसिला पॉइंट नंबर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड विद इन इंडिया मु कहली फॉरेन रो किछि गोटे ऑफिस इंडिया रो सी इंडिया इकोनॉमिक बाउंड्री आसीबो नाही सी इंडिया रो इकोनॉमिक बाउंड्री भितरे आसीबो नाही कटि गला तीन फिशिंग वेसल्स ऑपरेटेड बाय इंडियन रेसिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर एटा आसीबो मिलिटरी बेस ऑफ अदर कंट्री सिचुएटेड इन इंडिया आसीबो 2 आ 4 देखो सेम टाइप 2 नंबर आ 4 नंबर मुझे कौन कहली टिके संपूर्ण यदि इंडिया रो ऑफिस अछि यूएसए रे ताले इंडिया रो टेरिटरी भीतर सेटा आसीबो ठीक सेमती यदि यूएसए रो ऑफिस अछि कुड इंडिया भीतर ताले से कहार इकोनॉमिक टेरिटरी जो सी यूएसए रो इकोनॉमिक टेरिटरी जो इंडिया रो इकोनॉमिक टेरिटरी रे जीव नाही से कहार यूएसए रो इकोनॉमिक टेरिटरी जीव इंडिया रो इकोनॉमिक टेरिटरी रे जीव नाही बुझियला सेही ग्राउंड रे 2 आ 4 कटि गले मार्क करन कि सेही ग्राउंड रे 2 आ 4 कटि गले 1 आ 3 रहिले बुझिए गला ना नहीं बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुझिए गला नेक्स्ट टॉपिक को जीवा नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन अछि को टॉपिक रु ना बैंकिंग ऊपर क्वेश्चन अछि थीम को थीम रु ना आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी बैंकिंग रो क्वेश्चन ताल क्वेश्चन कौन कहू देखो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इट मेनली मीट्स व्हेन इन्फ्लेशन इज राइजिंग और फॉलिंग the governor of RBI is not allowed to vote in normal circumstances and can have a casting vote in case of deadlock over decision functions under chairmanship of union finance minister बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये क्वेश्चन करन या टू डिफिकल्ट क्वेश्चन आसी परिबो नाही ताले मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इज रिक्वायर्ड टू मीट एट लीस्ट केते थरा इट इज रिक्वायर्ड टू मीट एट लीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर केते एट लीस्ट 4 टाइम्स पर ईयर बुझियला तो इन्फ्लेशन राइजिंग फॉलिंग सहित आर किछि संपर्क नाही क्लियर एट लीस्ट 4 टाइम कोरम केते कोरम माने मिनिमम केते जन मेंबर हेले ये चलिबो ना 4 जन मेंबर हेले चले 4 मेंबर्स the governor of RBI is not allowed to vote in normal circumstances rule समस्त वोट दे पारिबे जदी इक्वालिटी ऑफ वोट हुए कोन को जदी इक्वल नंबर ऑफ वोट आसे ताले सेही जगह रे the governor of RBI has a second casting vote but initially से वोट देबे second casting vote दे पारिबे परे तो second option wrong it functions under chairmanship of union finance minister no it functions under chairmanship of RBI governor RBI governor is the ex officio chairman RBI governor is the ex officio chairman so this is wrong तीनटा जाका भूल हे गला क्वेश्चन पचारला which is not correct ताले all of this not correct बुझी पाले कि नहीं all of this not correct are you clear मजा आछी कि नहीं क्वेश्चन मजा आछी नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे
When the government increases its spending by borrowing from loanable funds from the market, the demand for loan increases, leading to high interest rate, which in turn reduces private investments. Topic है कौन ना टॉपिक कही परिवे इन्फ्लेशन बा बजेट इन्फ्लेशन नहीं पारे बा बजेट नहीं पारे ये टॉपिक रो क्वेश्चन आसे क्वेश्चन टी पूछंतु मन कर लोन नौछि किए नौछि गवर्नमेंट कौन कहली मन कर गवर्नमेंट लोन नौछि प्राइवेट सेक्टर भी लोन नौछि कहा टू पब्लिक टू एज अ पब्लिक आपण कहा को प्रिफर करिवे निजर लोन अमाउंट दबा गवर्नमेंट को ना प्राइवेट सेक्टर मते कोन पब्लिक हिसाब रे आपण प्रिफर करिवे कहा को लोन दबा को गवर्नमेंट को दबा को प्रिफर करिवे ना प्राइवेट को दबा को प्रिफर करिवे ना ऑब्वियसली टू द गवर्नमेंट बिकॉज़ गवर्नमेंट को दिया जाउथवा लोन कौन इट इज रिफंडेबल यू हैव ट्रस्ट ऑन द गवर्नमेंट एक्टिविटी ऊपर आपनकर ट्रस्ट अछि कि नहीं गवर्नमेंट पैसा फेरेबो ही फेरेबो गवर्नमेंट इज ट्रस्टवर्दी नॉट द प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट इज ट्रस्टवर्दी नॉट द प्राइवेट सेक्टर so this effect is called what this is called crowding out effect so the government अधिक लोन नहीं जीवो प्राइवेट पई आ पैसा पड़िबो पैसा it will reduce private investment कमी जो जो इफेक्ट को कौन कहा जाए this is called crowding out effect कौन कोंदी this is called crowding out effect बुझे गला क्राउडिंग आउट कौन बत परियो क्राउडिंग आउट आसे अच्छा क्वांटिटेटिव इजिंग कौन क्वांटिटेटिव इजिंग कौन ना जो डोमेस्टिक मनी सप्लाई बढ़ाई दिया जाए डोमेस्टिक मनी सप्लाई बढ़ाई दिया जाए ताको कहते क्वांटिटेटिव इजिंग कौन कहले डोमेस्टिक मनी सप्लाई बढ़ाई देले तो कौन कहते ताको दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इजिंग बुझिला मो कथा कौन पाई डोमेस्टिक मनी सप्लाई बढ़ा जाए टू इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी to increase economic activity को increase करिया पाई सेटा कोनती this is called quantitative easing मन रहिला ई दिरा पॉइंट इट इंपोर्टेंट नेक्स्ट the variety of inputs required at every stage during production one is fixed capital which of the following comes under fixed capital भीतर क्या आसन नाउ टॉपिक कोन ये नेशनल इनकम कहि परिबे बा बेसिक कांसेप्ट्स कहि परिबे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टॉपिक एला कोन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टॉपिक रो क्वेश्चन पचाला को गुडा का या भीतर फिक्स्ड कैपिटल भीतर आसीबे बहुत इजी क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट समस्त यार आंसर करिवे और ठीक करिवे फिक्स्ड कैपिटल या भीतर को गुडी को tools machines buildings आसीबे मनी टा कोन मनी रो लिक्विडिटी इज हाई मनी इज हैविंग हाई लिक्विडिटी money is having high liquidity so this is not fixed capital so 1 2 4 1 2 and 4 এটা সমস্ত ঠিক कर दे consider following statements regarding inflation topic कौन topic है inflation very important question topic है inflation demand pull inflation occurs when overall demand for goods and services exceeds their supply cost push is caused by increase in production costs such as wages or raw material which of the following is correct समस्त एटा कहि परिबे very basic question very basic question ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऊपर क्वेश्चन पचाला
का ऊपर क्वेश्चन पचाला ऑन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कौन हो demand pool occurs when demand for goods demand is more than supply नाही demand अधिक अछि वर्तमान जेमति गैस रो कंडीशन देखुछन पेट्रोल रो कंडीशन देखुछन सेत पई तो प्राइस गुडा को बढ़ुछि कॉस्ट पुश द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़े लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर कॉस्ट बढ़िले प्राइस बढ़िले त कहला कॉस्ट पुश सो दुईटा जाका ठीक अछि बोथ आर करेक्ट consider the following in the context of medium of exchange used in India topic con topic money banking by money which is used as a medium of exchange in India ना से क्वेश्चन कला medium of exchange हिसाब रे सब गुडा को यूज करा जाउछि but which of the following can be considered as fiat money कोन ना fiat money होछि where there is a government backup जोटी गवर्नमेंट बैकअप अछि ताको fiat money कोन तो या भीतर ये पांचटा भीतर गवर्नमेंट बैकअप कहा पाखरे अछि बिटकॉइन कोन गोटे मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज बिटकॉइन अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नो चेक आउट डीडी डिमांड ड्राफ्ट एटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज हिसाब रे यूज तो हुए दे आर मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट गवर्नमेंट कोन बैकअप दोछि मु गोटे चेक देली तुमको ते टंका उठेई पारलन मु गोटे डीडी देली तुम नार ते टंका उठेई पारलन सेतरे कोन किछि गवर्नमेंट बैकअप अछि कि किछि गवर्नमेंट बैकअप नाही ताले गवर्नमेंट बैकअप कोथरा ना जो नोट्स और कॉइन्स यूज करते सेइथरे अछि जो नोट्स और कॉइन यूज करूचे सेइथरे गवर्नमेंट बैकअप अछि हैला कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू यूपीआई जो यूपीआई रे पेमेंट कर स्कैन करके पेमेंट कर देले स्कैन करके पेमेंट कले कौन कहला दिस इज एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय एनपीसीआई मतलब 1 by 1 फोन इज इट करेक्ट Is this correct? Yes, NPCI developed. Are you charged for doing UPI? यदि आपण यूपीआई रे पेमेंट करछनी स्कैन करिके ताले आपण को किछि चार्ज पडुछि कि गवर्नमेंट किछि चार्ज बैंक के चार्ज पकोछि कि नो नथिंग किछि चार्ज पडुछि कि किछि चार्ज पडु France became the first European country to accept UPI. Yes. France is the first country. ठीक अछि. Next. With reference to Indian economy, which of the following are most likely to happen if repo rate is decreased? बहुत important question. Very important question. टॉपिक कौन टॉपिक है बैंकिंग रो आसिला क्वेश्चन एठी रेपो रेट कमिले कौन हबो कौन कहली रेपो रेट कमिले कौन हबो सीडीआर कौन करेंसी डिपॉजिट रेशियो equals to currency held by public
डिवाइडेड बाय कौन हम पब्लिक पाखरे केते टंका अछि डिवाइडेड बाय डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन बैंक पब्लिक बैंक रे केते डिपॉजिट करछन डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन बैंक टिके कष्ट क्वेश्चन बुझिए मन दे टिके कष्ट क्वेश्चन एटा बुझन मन दे व्यस्त होन फास्ट बुझिए हम करेंसी डिपॉजिट रेशियो कोन सुनो मन दे करेंसी डिपॉजिट रेशियो कोन मन कर मु 100 टंका रोजगार कली आज 100 टंका रु 50 टंका मो पॉकेट रे रखिली पाखरे कैश आकार रे रखिली 50 टंका नेकी बैंक रे डिपॉजिट कर देली करेक्ट 100 टंका रोजगार कली 50 टंका मो पॉकेट रे कैश रखिली 50 टंका नेकी बैंक रे डिपॉजिट कर देली ए जो रेशियो करेंसी हेल्ड इन पब्लिक करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक मो पाखरे रहला 50 टंका डिवाइडेड बाय डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन बैंक केते 50 टंका सो 50 बाय 50 50 बाय 50 अमाउंट्स टू 1 so CDR currency deposit ratio केते गला 1 हे गला so currency deposit ratio जते बेले 1 money held by public is equals to deposit in the public bank deposit of public in the bank लोकन का पाखरे जति की टंका पब्लिक पाखरे पब्लिक रो टंकाटा बैंक रे मथे सेति अछि हैला CDR जते बेले 1 नाउ क्वेश्चन मोर कहूची कि जते बेले रेपो रेट डिक्रीज हे जाउची रेपो रेट डिक्रीज हेले कोन हबो प्रथम कथा रेपो रेट कमी गले कौन हम ना इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कमी जीवो रेपो रेट कमिले कौन हम ना इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट रिड्यूसेस इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ऊपर इंटरेस्ट कमी जीवो बुझ पाले कि नहीं यदि बैंक डिपॉजिट ऊपर इंटरेस्ट कमी जाए ताले एई पार्ट डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन बैंक आपण बैंक रे डिपॉजिट करिवे कि कमी देबे हो कि नहीं कौन करेंगे एटा को कमई देबे डिपॉजिट ऑफ पब्लिक इन बैंक आपण कोन करिवे ना एटा को कमई देबे नाउ पब्लिक करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक अधिक होई जो निज पाखर अधिक टंका रखि ता माने ए फ्रैक्शन रे न्यूमरेटर टा बढ़ी गला डिनोमिनेटर टा कमी गला कोन कहली न्यूमरेटर बढ़ी गला डिनोमिनेटर टा कमी गला तो सीडीआर बढ़ी जीवो देयर विल बी इंक्रीज इन करेंसी डिपॉजिट रेशियो कौन हबो देयर विल बी इंक्रीज इन करेंसी डिपॉजिट रेशियो करेंसी डिपॉजिट रेशियो टा बढ़ी जो समस्त बुझिले क्लियर कौन हम करेंसी डिपॉजिट रेशियो बढ़ी जो सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट नाउ डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द मार्केट ना करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक कौन होची बढ़ुची मार्केट रे मनी बढ़िला ना कमिला स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट नाउ स्टेटमेंट 2 कहिली स्टेटमेंट 2 ऑलरेडी कहिली करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एटी बढ़ुची तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग provide a boost to the business sector boost करिवो ना करिवनी public held with money held with public increase हे गला so repo rate reduce hele you will get cheaper loans low repo means cheap loan कम इंटरेस्ट रे आपण लोन पाइबे है कौन हम ना 3 नंबर टा भी प्रोवाइड अ बूस्ट टू द बिजनेस सेक्टर ठीक अच्छे 1 आउ 3 ओनली करेक्ट सेकेंड ऑप्शन टा भूल हो गला सेकेंड ऑप्शन टा कौन कहली भूल हो गला कहली एबे बुझिएला देखुछ केते टेक्निकल क्वेश्चन केते सहज दिसुची बट वेरी टेक्निकल क्वेश्चन ए क्वेश्चन जहार ठीक होउची एठी इकोनॉमिक्स ओपीएस जो जून 7 रे जो परीक्षा अछि से परीक्षा को डरिवार किछ आवश्यकता नहीं ये क्वेश्चन जे ठीक करछन 7 जून इज योर्स द डे इज योर्स डोंट वरी से परीक्षा क्वालिफाई करवाटा थय आगे बुझिबा which of the following is not used to calculate national income टॉपिक कौन टॉपिक है नेशनल इनकम बहुत सहज क्वेश्चन मु एतरे इंटरफेयर करबिन निजे कह दियो फटाफट कहबे
ले गोटे कोन कॉकरोच पार्टी आसिलानी पॉलिटी गवर्नेंस क्लास इतले डिस्कस करता फास्ट कौन करेक्ट हम सस्मिता रेपो रेट सह सीडीआर सी कहली सीडीआर रिलेशन बुझेली फास्ट प्रथम आउ थे कह तुम व्यस्त होनी यहाँ कर सार आउ थे कहदेवी सस्मिता डोंट वरी ताले एटा कौन हम रे को मेथड नाही बैलेंस ऑफ पेमेंट मेथड किछि नाही बैलेंस ऑफ पेमेंट मेथड किछि नाही नेक्स्ट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गुड्स इन सेकेंडरी सेक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्टली एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स टर्शियरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज वेयर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स ताले प्राइमरी केतरा प्रोडक्ट अछि केतरा सेक्टर अछि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो प्राइमरी सेक्टर रे कोन आसे प्राइमरी सेक्टर इज ऑल अबाउट natural products like agriculture allied agriculture ये सब then secondary कौन आसे तुम्हारा प्रोडक्शन हुए जो बड़ा टर्शियरी इज सर्विस ताले देखिले एटा समस्त भी ठीक करियो एतरे भी किछि डाउट आसीबनी मत लागुनी का समस्त को ठीक हो कोन फटाफट neither one nor two why neither one nor two ये कुछ गुड्स इन सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय एक्सप्लोइटिंग नो सेकेंडरी सेक्टर टारे डायरेक्टली कोठी एक्सप्लोइट होची ये तो प्राइमरी सेक्टर रे होची टर्शियरी सेक्टर रे कवर्स एक्टिविटीज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स नो टर्शियरी सेक्टर इज अबाउट सर्विस सेक्टर सो बोथ आर इनकरेक्ट consider following institutions which of the institutions shall issue fixed income security in the debt market fixed income security के issue करि परिबे debt market रे मानक भितरु state government municipal corporations small industrial development bank of India SIDB ताले किए करि परिबे who are the issuers in this market लेखन issuers central government state government municipal corporation financial institution bank public sector public limited company private company real estate investment trust ये सब करि परिबे so debt market is a part of security market or debt market is also called fixed income market समस्त करि परिबे it is a part of fixed income market it is a part of security market or fixed income market. Consider following statements regarding money multiplier. Money multiplier अर्थ कौन पढ़ो Money multiplier is maximum limit to which money supply can be affected by bringing about changes in amount of money deposit. There is a direct relationship between money multiplier and legal reserve ratio. It means that if the reserve ratio is higher, then the money multiplier will also be higher. प्रथम कथा है मनी मल्टीप्लायर कौन मनी मल्टीप्लायर कोड देखा जाए ना मनी मल्टीप्लायर इज फाउंड इन कमर्शियल बैंक्स मन कर कमर्शियल बैंक तुम एसबीआई गल एसबीआई रे 10,000 टंका डिपोजिट कल 10,000 टंका एसबीआई को सीआरआर रखा पड़ा मन कर
5%, 10,000 5% है 500 टंका। एसएलआर रखिया पड़ला मन कर 10%, 1000 टंका। टोटाल केते रखला ना 1500 टंका। आउ बंचिला केते ना 8500। ये से 8500 करिवो कोन ना डिस्ट्रीब्यूट करिवो, लोन दबो। कोन कला ना से 8500 को लोन देला। एति की पळेला स्टैट्यूटरी डिपॉजिट तार, तापर 8500 को लोन देला। बर्तन 8500 को मुंदर लोन नेला, तुमे मुद्रा लोन नेला। मुद्रा लोन नै कि कोन कलो सेठी ना गोटे दुकान गोटे कलो, शॉप हैला। कोन कलो गोटे दुकान कलो। बर्तमान जो दुकान तयारी कलो सेठी किछि इन्वेस्टमेंट हैला, केबिन पकेलो, ये पकेलो, से पकेलो, सेठी पैसा देलो। तन ए 8500 टा देखो तुम 10000 टका केते जगह रिफ्लेक्ट करछि, एटु बुलुछि 8500 इडी डिस्ट्रीब्यूट हे हैला। ए जो डिस्ट्रीब्यूशन होछि एटा को जाय मनी मल्टीप्लायर। बुझिला, ए डिस्ट्रीब्यूशन नो कोनी मनी मल्टीप्लायर। Which money multiplier है maximum limit to which money supply can be affected by bringing about change in amount of deposit. यदि डिपोजिट बढ़े बैंक रे, कौन कहल, यदि बैंक रे डिपोजिट बढ़े ताहले बैंक रो लेंडिंग भी बढ़िवो, हां कि नहीं? लेंडिंग भी बढ़िवो, लोन अधिक दबो। यदि लोन बढ़े ताहले मते कोन लिक्विडिटी बढ़िवो ना बढ़िवोनी? हां बढ़िवो। So maximum limit to which money supply can be affected by bringing about changes in amount of funds. This is money multiplier. First option is correct. कौन कहली प्रथम option ठीक अछि। Second, there is direct relationship between money multiplier and legal reserve ratio. If ratio is higher, money multiplier will also be higher. The direct relation ना indirect relation, बर्तमान कहि देला आंसर सस्मिता। देखो सस्मिता ऑलरेडी आंसर दे सारते। ना डायरेक्ट रिलेशनशिप ना इनडायरेक्ट रिलेशनशिप रे कहली। एठी देखो रिजर्व रेशियो माने ए 500 1000 जो नउथला ये कहला बढ़ी गला। ये 500 जगह एठी रखिबो 1000, 1000 जगह रखिबो 2000, ताले टोटल जो कितना 3000, 3000 हे गेले केते टंका दई परबो लोन? 7000 टंका लोन दे परबो। एठी 8500 लोन दे परथले, एठी 7000 टंका लोन दे परबो। एठी 8500 लोन दे परथले, एठी 7000 टंका लोन दे परबो। बुझिला? ताले एटा डायरेक्ट रिलेशनशिप ना इनडायरेक्ट रिलेशनशिप? This is indirect relationship or inverse relationship. Second option is wrong. First option is correct. बुझिए ना? Next question. Which of the following statement is correct? Treasury bills are issued by both central government and state government. Commercial papers are secured short-term money market instrument. In ways and means advance, Government of India borrows from RBI and repo rate of interest. All India financial institutions can issue certificate of deposits for a maturity period of up to 1 year. Which is correct? 15 number देखो। ठीक है, समस्त को ठीक है, भाभी करो। State government can issue only state development loans. Treasury bills are not issued by state government. State government can issue state development loans. So first option is wrong. Second, commercial paper are secured short-term money market instruments. Commercial paper is a short-term debt instrument issued by companies to raise funds. So this is unsecured, not secured. Commercial papers are unsecured. Not secured. ताले भूल गला। In ways and means advance, Government of India borrows from RBI at repo rate of interest.
Ways and means advance रे Government of India borrows at repo rate of interest. True or false? Yes, this is short term lending process. এটা তো ঠিক হলো কোন আছে তো ফোরটা ভুল হইতিব which of the unemployment generally occurs in urban area topic on employment unemployment topic employment কোন ফটাফট disguised unemployment কোড দেখা যায় disguised টা agriculture sector দেখা যায় disguised is found in agriculture sector three only Vanita correct seasonal out disguised କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ that is found in rural that is why people migrate ये दुटा rural रे देखा जाए एटा urban रे देखा जाए consider following statements regarding small finance bank consider following statements regarding small finance bank which is correct about small finance bank on ये पहले देखो they are established as public limited company under Companies Act yes correct they provide basic banking service of acceptance of deposit and lending existing non-banking financial company microfinance institutions local area banks can apply to become small finance banks foreign shareholding will not be allowed in these banks as per the rules of FDI कौन हो small FDI is allowed third option is wrong 1 and 2 correct 1 and 2 correct yes FDI is allowed next question on CRR on the देखो CRR is to maintain on daily basis whereas SLR to be maintained on fortnightly basis CRR is to be maintained as per Banking Regulation Act whereas SLR is to be maintained as per RBI Act the Reserve Bank of India can decide CRR without any floor or ceiling rate as per the situational demand of the country देखो बहुत important question है परंतु
very important question. CRR এটা actually উল্টা দিচ্ছে, CRR টা হচ্ছে fortnightly basis, SLR টা হচ্ছে daily basis, so ভুল। CRR is to be maintained as per bank RBI Act, SLR is to be maintained as per Banking Regulation Act, so এটা भी ভুল। RBI can decide CRR without any floor or ceiling rate as per situational demand, এটা কোন হবে? Yes, CRR is decided by whom? CRR is decided by RBI. CRR কে দিয়ে? তোমার মনিটারি পলিসি কমিটি আসুଛି সেটা আসছে না, CRR কে দଉଛି? CRR is decided by RBI. କାହିଁକି incorrect ला ବୁଝିଲା ତ, ବହୁତ important. Next, which of the following are included in non-tax revenue receipt? Now government revenue receipt, tax revenue receipt ହେଇ ପାରେ, non-tax revenue receipt ବି ହେଇ ପାରେ। देखो कौन हो? इंटरेस्ट रिसीट, गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीट दुई प्रकार हेई पारे, गोटेला टैक्स रेवेन्यू रिसीट आ गोटेला नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। गोटेला टैक्स रेवेन्यू रिसीट आ गोटेला नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। So interest receipt on loans by central government, dividends on investment made by the government, fees in service, grant in aid, so all correct, all correct, okay nahi? With reference to Indian economy, consider following statements. Non-tax revenue in terms of percent of GDP has continued to increase in last 5 years. Non-tax revenues represent non-debt capital receipts of the union government. Which is correct? Another important question. Now, a question, ये टाइप रो क्वेश्चन कौन करियो मु कहूची, ए भलिया क्वेश्चन पचरा जाय कोन पय जानि केवल छाड़िया पय। काहे कहूची ना, तुम देखियो जदी बजेट देखियो नॉन टैक्स रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जीडीपी, ये लास्ट 5 ईयर इंक्रीज हेची ना डिक्रीज हेची, ये प्रति वर्ष ये क्वेश्चन आसले क्वेश्चन आंसर चेंज हे जिवो। ए वर्ष जहा 12 वर्ष को अलगा हे जिवो, तार वर्ष को अलगा हे जिवो। तेणु जेतो 5 ईयर डाटा ऊपर क्वेश्चन पचारिबो इकोनॉमिक्स रे कंपैरेटिव डाटा, से क्वेश्चन उडा स्किप कर दो हला। एटा कोन देखिया पड़ियो, 5 वर्ष डाटा एबे कोन अछि देखिया पड़ियो, ठीक कि भूल। नेक्स्ट देखो, which of the following events are likely to happen as a result of surge in the capital inflow in the country? Capital inflow बढ़िले या भीतर कोटा हबो हला। मो क्वेश्चन होची कैपिटल इनफ्लो बढ़िले या भीतर कोटा हबो? फटाफट को
कैपिटल फ्लो बढ़िले कौन हम इन्वेस्टमेंट बढ़िबो इकोनॉमिक ग्रोथ हो यस इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हेले कहीं इन्वेस्टमेंट करिवो इन्फ्लेशन हम कॉम्पिटिटिवनेस एक्सपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट बढ़िबो कैपिटल फ्लो बढ़िले एक्सपोर्ट बढ़िबोनी किछ 1 और 4 ना इंडियन रुपीटा डेप्रिशिएट हेले एक्सपोर्ट बढ़े इंडियन रुपीर वैल्यू कमिले एक्सपोर्ट बढ़े कहीं बढ़े बुझे दउछ देख मन कर $1 इक्वल्स टू 90 रुपीस तो जने पेन किणुची यूएसए रु पेन किणुची इंडिया रु सी $1 गोटे पेन वैल्यू मन कर 10 टंका 10 रुपीस पर पेन ताल से केतरा पेन नबो एठी 9टा पेन नबो इंडियन रुपीस रो वैल्यू डेप्रिशिएट हेकी गेला 100 रुपीस $1 इक्वल्स टू 100 रुपीस से केतरा पेन नबो 10टा पेन नबो ताल से एटा को प्रिफर करिवो से प्रिफर करिवो वैल्यू डेप्रिशिएट हो हैला ताले डेप्रिशिएशन इंप्रूव्स एक्सपोर्ट लिखो depreciation improves बुझीगला which of the following is not an impact of increasing the real effective exchange rate of country's currency देखो इंक्रीज रियर इंक्रीज हेले कोन हुए एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हाई रियर एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी देखो करेंसी रो वैल्यू बढ़िबो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हेले मते कोन एक्सपोर्ट कोन हबो ना एक्सपोर्ट कमिबो इंपोर्ट बढ़िबो एक्सपोर्ट कोन हबो ना एक्सपोर्ट कमी जिवो बा मु कहबी जदी एक्सपोर्ट्स become expensive and import cheaper export become expensive बुझ पाले कि नहीं competitiveness decrease हे जो चलो what is the correct answer here depreciation of currency next consider following statement regarding monetary system fiat money is currency that is backed by physical commodities such as gold silver legal tender is the money that is legally valid for the payment of debts and that must be accepted for the purpose when offered which is correct एटा भी समस्त ठीक कही करि पारिबे फटाफट करन one is correct fiat money is backed by the physical it is backed by दुईटा करेक्ट अछि one is incorrect fiat money is backed by कोन कहथिबी फिजिकल कमोडिटी कोन मु कहले गोटे 500 टंकिया नोट अछि मो पाखे आ गोटे गोल्ड कॉइन अछि मो पाखे गोल्ड कॉइन मते को गोटे गोल्ड कॉइन ना वैल्यू केते 500 टंकिया नोट रो वैल्यू 500 टंका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ गोल्ड कॉइन
गोल्ड रो वेट जति फिजिकल 5 ग्राम गोल्ड कॉइन कि 10 ग्राम कि 50 ग्राम केते ग्राम केमि जानि जति ग्राम तार वैल्यू सेति 500 टंका नोट रो वैल्यू 500 टंका so gold coin is backed by commodity gold coin is backed by commodity hela fiat money is the currency that is backed by physical commodity भूल गला लीगल टेंडर कोन ना मु तो लोन नेची लोन रिटर्न करूची लीगल टेंडर कोन ना मु लोन नेची लोन टा को रिटर्न करूची यू हैव टू एक्सेप्ट इट you have to accept it if it is in legal tender then you have to accept it two number ta correct देखि दियो हेगला बुझे गला पढ़ी दियो टिके क्वेश्चन आउ थरे 23 नंबर टा टिके आउ थरे पढ़ी दियो वाला which of the following is a situation where farms in response to higher cost reduce quality of goods or service मने करो गोटे दही पैकेट किनचो 42 रुपीस देकी 500 ग्राम ये कहला दही रो प्राइस बढ़ी गला मैं कहला नाही 45 टका करबोनी जति अछि प्राइस सेति रख सेही 42 टका रे दियो तल से कोन करियो पानी मिसै कि दो क्वालिटी कंप्रोमाइज करियो आइदर क्वांटिटी कमाइबो सेही 42 टका रे देले 500 ग्राम दोथले 450 ग्राम दबो बा 50 ग्राम पानी मिसै कि दबो दीटर गोटे करियो ये कहू से दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज से कंडीशन को कोन कहन दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्किमफ्लेशन condition मन रखंतु इज कॉल्ड स्किमफ्लेशन हैला नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट मनी मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर ऊपर इंपैक्ट कहार पड़ियो मनी मल्टीप्लायर कोन ऑलरेडी मु कहि दैछि सीआरआर और एसएलआर मनी मल्टीप्लायर माने गोटे मनी केते थरा मल्टीप्लाई होउछि मार्केट सीआरआर और एसएलआर ऊपर डिपेंड करिवो ऑलरेडी मु बुझैछि गोटे एग्जांपल नैथिली हाई पावर्ड मनी ऊपर डिपेंड करिवो बट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सहित आर किछि संपर्क नाही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सहित आर किछि रिलेशन नाही ए जो हाई पावर्ड मनी एटी लिखलो सेटा कोन हाई पावर्ड मनी एगो रिजर्व मनी कह जाए M0 बोली मध्य कह जाए रिजर्व मनी और M0 मन रख Which of the following best refers to frictionally unemployed person? Frictional unemployment कौन? टॉपिक है कौन ना unemployment रो आछि पढ़ो साइड हे जाउछि कौन कहला ये a person holding job that doesn't align with
their qualification and exerted efforts. A person doesn't contribute anything to the output even when visibly working. An individual is currently unemployed and actively seeking a more suitable job. Person who doesn't possess the required qualification for a particular job. Which of the following is correct? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट केतेबेले देखिया मिलना ड्यूरिंग जॉब स्विच जॉब चेंज समय फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखिया मिले फटाफट कौन जॉब चेंज समय एटा देखिया मिले एक्टिवली सीकिंग अ मोर सुटेबल जॉब with reference to Mudra Bank, which is correct. Mudra is fully owned subsidiary of RBI. It is formed with an objective of development and financing micro unit enterprise. Mudra Bank cannot refinance enterprises in informal sector. Mudra is fully owned subsidiary of RBI. True or false? It is a subsidiary of SIDBI, not RBI. Objective कौन? Objective of development and financing micro unit enterprise. What is the objective? It is a refinance institution. Refinance होची यार objective. लिखला cannot refinance ये भी भूल गला सब भूल. Which of the following are classified as agency service offered by commercial bank? Agency service कौन by commercial bank? बैंक रो बेसिक फंक्शन कौन? Accepting deposit and giving loans. ये दिटा ला बेसिक फंक्शन या व्यतीत आउ जहा रहिला से सबला एजेंसी सर्विस या व्यतीत आउ जहा रहिला सबला एजेंसी सर्विस तल देखो कोन इशूइंग लोन्स फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट तल ये बेसिक रे गला एजेंसी रे जीवन इनकम टैक्स पेमेंट एजेंसी रे जीवो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट कोन बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी जीवो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रे जीवन जीवन ओवरड्राफ्ट अर्थ कोन तुमर 500 टंका अछि कोथरे बैंक रे 500 टंका अछि तुम 1000 टंका विथड्रॉ करछो दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बेसिक सर्विस रे जीवो
not agency. Loan ne पड़ेगा ना, overdraft is a type of loan or lending. So 2 4 of answer correct. ठीक है जी. Which of the following report surveys are published by RBI as part of its policy research and data dissemination function? बहुत important question एटा. देखिए किए कहूँ ठीक. हाँ बेसिक रे जीवो. Very good. Trend and progress of banking in India. This is also published by RBI, but under legal provision. एटा कौन सा? एटा legal provision अनुसार or legal obligation अनुसार. You can write as legal obligation. मो कहिबार उद्देश्य है ये सब गुड़ाक पब्लिश हुए बाय आरबीआई, बट स्पेसिफिकली एटा ये चारटा जाक 1 2 3 4 1 2 3 5 ये पब्लिश हुए डिसेमिनेशन फंक्शन अनुसार, बट एटा एटा पब्लिश हुए अनुसार कोन ना अंडर लीगल ऑब्लिगेशन. अंडर लीगल ऑब्लिगेशन एटा पब्लिश हला. Dear money policy results in tightening of credit through an increase in interest rate. Expansionary policy will always cause crowding out of private activity in credit market. Expansionary policy is intended to prevent or moderate economic downturns and recessions. Dear money policy कौन? चीप मनी पॉलिसी कौन? चीप मनी पॉलिसी रे इंटरेस्ट रेट टा रिड्यूस करा जाए. कौन कहल? चीप मनी पॉलिसी रे इंटरेस्ट रेट टा को रिड्यूस करा जाए. Dear money policy results in tightening of credit. एटी कौन है ना? क्रेडिट टाइटनिंग. करेक्ट. Expansionary policy will always cause crowding out of private activity in credit market. कौन कहूची? Expansionary policy will always cause crowding out of private activity in credit market. Expansionary policy रो ऑब्जेक्टिव कौन है? ये एक्सपैंड करिया को चाहूची इकोनॉमी. Expansionary policy is intended to prevent moderate economic downturns. कौन हो? 2 out 3 भितर which is correct. ये प्रिवेंट करछ मॉडरेट इकोनॉमिक डाउनटर्न रिसेशन. ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट करिवो नाही. It will not create crowding out effect. It will not create crowding out effect. The RBI has specified certain regulatory trigger points as part of prompt corrective action framework. Which of the following are included as parameters for introducing prompt correcting action framework in a particular bank?
कौन हुए थे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान एटा कौन बने टू चेक प्रॉब्लम ऑफ एनपीए दिस इज टू चेक प्रॉब्लम ऑफ एनपीए दिस इज टू चेक प्रॉब्लम ऑफ एनपीए तो को गुड़ाक सब यूज करा जाए 31 डेट सर्विस ऑब्लिगेशन नहीं आउ सब अच्छे एनपीए भीतर कौन कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो केते कैपिटल एवं रिस्क 100 टंका देइछ लोन रे सेतु रिस्क वेटेड एसेट केते 20 टंका कि 50 टंका कि 30 टंका सेटा नॉन परफॉर्मिंग एसेट वेयर आइदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज नॉट पेड फॉर मोर देन 90 days and return on asset ऊपर रिटर्न होउची कि नहीं सो 134 डेट सर्विस ऑब्लिगेशन रे एथरे आसे which is not correctly matched very important frictional unemployment structural seasonal एटा निजे कहि देबे मते कहया दरकार नहीं फटाफट को कहू ना एटा कौन हला कौन के रेस्पोंड करना बी फ्रिक्शनल prices during recession and decline in during economic growth यार किसी रिलेशन अच्छी क्या सहित structural arising from mismatch between the jobs available in market and skills of available workers in the market occurs during certain seasons of the year seasonal फ्रिक्शनल केतेबेले कहितली ना ड्यूरिंग जॉब चेंज so first option wrong second structural arising from mismatch between the jobs available in market and the skill deficit this is correct seasonal during a particular season हेगला
एटा आसीबा पर bankers deposit with RBI are considered to be a part of bankers deposit with RBI is the part of monetary base कौन monetary base is physical paper and coin currency in circulation physical paper and coin in circulation એટલે monetary base this is monetary base but not the part of money supply money supply money supply part it is not accessible it is not a part of money supply because it is not accessible ये टंका कोन एक्सेस करि परबे कि इटा आरबीआई पाखरे डिपॉजिट है बैंकर्स डिपॉजिट so it is a part of monetary base but not supply base money ha correct next consider following statement with regard to prompt corrective action framework of RBI with respect to prompt corrective action framework of RBI को एटा को it is exclusively applies to commercial bank correct RBI has the authority to restrict banks from issuing loans and many impose limits on lending to specific sector or entity RBI has authority to restrict bank from issuing loans and many impose limits on lending to specific sectors ठीक है PCA can impact regular operation of bank नहीं PCA regular operation सहित कि संपर्क नहीं it has no relation with the Sivan correct next which of the following functions is carried out by the RBI to reduce inflation inflation reduce करिया पई एथर कोगुडा को यूज करा जाय which is used to reduce inflation inflation ने कौन हुए more money supply here you are reducing inflation ने कौन हुए more money supply so it कौन बोलते you are reducing money supply you are reducing money supply so SLR बढ़ाई देले RBI पाखरे बैंक वॉल्ट रे डिपॉजिट बढ़ी जिवो मनी सप्लाई कौन कले कमिवो गवर्नमेंट सिक्यूरिटी सेल कले कौन हम मनी सप्लाई बढ़िवो ना कमिवो मनी सप्लाई कम कले कौन हम सॉरी गवर्नमेंट सिक्यूरिटी सेल कले कौन हम एटा बढ़ी जिवो रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट हबो तल दीटा ऑप्शन एथर करेक्ट ओनली 2 इज ट्रू which of the following can be considered as the steps taken to achieve effective monetary policy transmission by RBI
Which of the following can be considered as the steps taken to achieve effective monetary policy transmission by RBI? फटाफट को इफेक्टिव मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हिसाब से कोटा को यूज करा जाए लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन देखो केवाईसी और कैपिटल एडिक्वेशन हम ये सेपरेट कथा केवाईसी टा को नो योर कस्टमर्स कैपिटल एडिक्वेशन हम अलग एनपीए रे आसिलानी सो लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन और करेंसी स्वैप एटा हले कोन हो इट इज रिलेटेड टू स्टेप्स टेकन बाय अचीव टू मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन ये मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन या को यूटिलाइज करि परियो नेक्स्ट यदि CRR increase हुए by 50 basis point, which of the following is likely to happen? CRR यदि बढ़ी जाए by 50 basis point, ताले कौन हो? फटाफट CRR बढ़ी ले by 50 basis point कौन हो? CRR बढ़िला माने बैंक को रिजर्व बढ़े पड़ो बैंक्स हैज टू इंक्रीज रिजर्व हाँ कि नहीं कौन बैंक्स हैज टू इंक्रीज रिजर्व बैंक को रिजर्व बढ़े पड़ो रिजर्व बढ़िले मनी लेंडिंग पे कमी जो it will reduce amount of money available for banks to lend हाँ कि नहीं easy question next consider following statements with respect to payment banks देखो इधर कौन हो easy question पेमेंट बैंक कौन पेमेंट बैंक रा एग्जांपल के मते कहि परिबे कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ पेमेंट बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक वो पेटीएम पेमेंट बैंक नो पेमेंट बैंक रा किछि नियम अछि दे कैन नॉट lend they cannot undertake lending activity गोटे कहि दउछि they cannot undertake lending activity ताले मते को फर्स्ट ऑप्शन can they issue ATM card debit card and credit card जछन lending करि परिबेनी ताले से ATM card debit card credit card करि परिबे की इशू करि परिबे की ATM card, debit card they can issue, but credit card they cannot issue. Which credit card is a type of 45 days lending with zero interest. नहीं कि credit card lending नहीं की. So first option wrong. They can keep demand and time deposit. They can accept demand deposit, but cannot accept time deposit. Only demand deposit.
only demand deposit. कौन होता है 1 and 3 incorrect हो जाते ना incorrect. Next question on casualization of workforce. Next question on casualization of workforce. The process of moving from self-employment and regular salaried employee to casual wage work as casualization of workforce. Casualization of workforce makes workers highly vulnerable. In last 4 decades, people have moved from self-employment and regular salaried employee to casual wage work. कौन एटा समझते कहियो जस्ट गोटे मिनिट जस्ट 1 मिनिट ब्रेक टिके हम पानी पिउछ बहुत समय क्लास हलानी आज जस्ट 1 मिनिट. हां चलो को all of the above. Question number 40. Self-employment and regular salaried employment to casual wage work. This is called casualization of workforce. Correct. Called casualization of work. It makes the workers highly vulnerable. Correct. In last 4 decades, people have moved from self-employment and regular salaried employment to casual wage work. So all of these are correct. Which of the following term indicate a mechanism used by RBI for absorbing excess liquidity from the market? Market रू excess liquidity absorb करिया पई को instrument आ भितरु यूज करा जाय. कौन यूज करे जल्दी कौन
Market stabilization scheme. Very good. When RBI increases sale of government securities through open market operations, which of the following is not likely to happen? When RBI increases sale of government securities through open market operation, which of the following is most likely to happen? ये कौन सेल करुच सेल कले कौन हम क्या सेल करियो ना पब्लिक सेल कले तो आरबीआई सेल करिवे टू पब्लिक ताने पब्लिक मनी दे देबो आरबीआई पब्लिक कौन करियो ना पब्लिक मनी देबो आरबीआई ताले मनी जे देई देले हमें ताले मनी सप्लाई कौन हला ताले मनी सप्लाई कमी गला मनी सप्लाई कमिले एटा हमें कौन कहबा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कौन कहबा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कौन सेंटर इज फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी सेंटर इज फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हां कि नहीं बुझेला क्लियर which of the following is are considered as NDTL of the bank net demand and time liability भितर को गुडा का आछन या भितर कैश रिजर्व रेशियो आसीबनी आउ सब गुडा का आसीबो कैश सर्टिफिकेट आसीबो डिमांड ड्राफ्ट आसीबो मॉनेटरी डिपॉजिट आसीबो मनी डिपॉजिटेड इन करंट अकाउंट आसीबो next which of the following relationship explains the relationship between which of the following curve explains relationship between tax rate and tax revenue टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू वेरी इंपोर्टेंट एटा बारंबार पढ़ाई कही क्लास रे पढ़ेला टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू को कर्व एक्सप्लेन करूची व्हिच कर्व एक्सप्लेन्स Laffer curve simple very good this is what this is Laffer curve next in relation to concept of currency eta darkar nahi yes next very important question in Reserve Bank of India the Reserve Bank of India regulates public sector banks in the matter of को matter रे आरबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक को रेगुलेट करन
ये सब गुड़ाक रिवोकिंग ऑफ बैंकिंग लाइसेंस, मर्जर ऑफ बैंक्स, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स, एटा किए करिवो? दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोठी किए करिवो ना? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। RBI cannot revoke banking license. Next. Effect of inflation is not distributed evenly in the economy. There are chances of hidden costs for different goods and services in the economy. Which of the following section of people will benefit from inflation? Inflation ru को मानको benefit मिले? कौन कहली inflation ru को मानको benefit मिले? कोई थी फॉर्मूला कौन ना? PGCL, PGCL, DGCL, debtor gain, creditor loss. So debtor gain, PGCL producer gain, consumer loss, creditor air loss, pensioner fixed salary income, fixed वालांकर loss, variable salary वालांकर लाभ। एटा सब मन fixed salary loss, fixed income जो मानकर तांकर loss, variable income profit। Which of the following statement best describes slow session? Which of the following best describes slow session? Slow session the economy barely grows. Here the economy barely grows. Economy is growing slowly but has not entered a recession. But has not entered a recession. Consider following financial instruments which are traded in money market: cash management bill, sovereign gold bond, collateralized borrowing and lending obligations, certificate of deposit, commercial papers. Two sovereign gold bonds are not traded. Sovereign gold bonds are very basic question. This is not traded. Rest correct. 1, 3, 4, 5. Why does unemployment have detrimental impact on overall growth of the economy? Go on.
कौन कहते अनएम्प्लॉयमेंट रो डेट्रिमेंटल इंपैक्ट कौन पाई ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज dependent population increase, quality of life adversely affect, okay? Quality of life adversely affected, decline in health status, हम drop out from school increase सब ठीक अछि unemployment ये सब गुडा को पढ़िबो आ कोन करेक्ट सब ठीक अछि कि नहीं ऑल करेक्ट एसएससी जीडी एग्जाम के साथ स्कैम हो गया और स्कैम तो एबे ऑक्सीजन भलिया एवरीवेयर अवेलेबल कौन करिया तो पिला केते कष्ट करी पाठ पढ़िबे परीक्षा देबे प्रैक्टिस करिवे लास्ट को स्कैम हे जो बुझ परछन कि नहीं एते परिश्रम करू एते दिन परिश्रम सब स्कैम करिकी 2 मिनिट रे खत्म चल कौन वैल्यू रही दिन पाठ पढ़ियार now corruption has crossed all the limits now this is the time for a good governance this is the time to struggle and to start a new era गोटे नुआ एरा स्टार्ट हवा दरकार जो गुड गवर्नेंस थी माल एडमिनिस्ट्रेशन नथिवो करप्शन नथिवो then only you can have a better life index quality of life increase हो सेतल otherwise quality of life cannot be increased so gdp growth जते हेले quality of life बढ़िबो नहीं infrastructural growth हेले quality of life बढ़िबो नहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया कहले गवर्नेंस मजबूत होगा पड़ो एचडीआई री गोटे पार्ट जोटा पढ़ुंट कौन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यहीटा पढ़ुंट कौन से हैप्पीनेस इंडेक्स बाय अ स्मॉल हिमालयन किंगडम भूटान से कथा तो कहूली कॉकरोच पार्टी अच्छा हो रिवैम्प होवार आवश्यकता अच्छी कि नहीं कौन बर्तमान रिवैम्प आवश्यकता अच्छी कि नहीं एब्सोल्युटली अच्छी कौन कहली एब्सोल्युटली चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डिमांड फुल टाइम सरी आसलानी देखो क्वेश्चन आंसर जति कले बेनिफिटेड हलो कि नहीं समस्त जति हमें कलेनी क्वेश्चन बहुत बड़ बड़ क्वेश्चन ये छोट क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन नहीं किछ क्वेश्चन लेवल डिफिकल्टी लेवल जदि हम देखबे हाई लेवल डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन अछि क्वेश्चन लेवल हाई रा डिफिकल्ट लेवल हाई रा क्वेश्चन अछि बुझी बुझी तेणु कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होची हमर बेसिक ऑब्जेक्टिव आमे किछि इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बुझिबा हां कि नहीं क्वेश्चन माध्यम रे इटा आफ्टर द क्लास यू कैन डाउनलोड दिस वन यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम द आवर टेलीग्राम चैनल एटा को डाउनलोड करि परिबे समस्त तो करि कि पढिबे
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Demand pull inflation when the cost of production increases leading to higher price for goods and services. Cost push inflation when aggregate demand exceeds the available supply of goods and services. Structural inflation, India faces structural bottleneck in sectors like agriculture, infrastructure and logistics. Which is correct? ये दीटा तो फास्ट दीटा उल्टा दे दीची बुझिपारछन कि नहीं. डिमांड पुल ले कोन एग्रीगेट डिमांड एटा हवा कथा, डिमांड पुल ले एटा हवा कथा, एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स सप्लाई. कॉस्ट पुश रे एटा हवा कथा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस. सो ये दीटा देखो उल्टा दे दीची तेनु भूल हे गला ये दीटा. स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन पार्ट एटा ठीक अछि, ओनली वन ठीक अछि. Which of the following factors contribute to inflation? Decreased consumer spending, expansionary monetary policy, rising production cost, supply chain disruption. Last question है करता. कौन भाग? कंज्यूमर स्पेंडिंग कमिले डिमांड कमिला इन्फ्लेशन हबो कि? डिमांड कमी गला इन्फ्लेशन हबो कि? नो डिमांड नो इन्फ्लेशन. एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपैंड करूची इकोनॉमी टाको, सो इन्फ्लेशन हबो. राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट ताले एटी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हे जो. एटा डिमांड पुल हबो, एटी डिमांड पुल इन्फ्लेशन. सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ताले एटी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हे जो. एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी माने समस्त पाखे मनी अवेलेबल हबो, मॉनेटरी अवेलेबिलिटी विल इंक्रीज. बुझीगला ताले 1 2 कोडा सब गुडा हेगला हो ना. एक हेलानी नो डिमांड, एक नंबर हेलानी, 2 3 4 हेला या तो. M0 M1 concept पढ़ी दीजिए ओडी. Which of the following function is part of RBI is acting as banker to central government? RBI acting as a banker to central government. बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा. लास्ट क्वेश्चन एटा एटा करी विल वाइंड अप. लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट, very important. Opens current account of individual banks in e-Kuber. Now first question, RBI opens current account of individual bank in e-Kuber or not? Answer is yes, it opens. Yes, it opens. But as banker to bank, question कौन देला?
नॉट एज बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये फर्स्ट ऑप्शन ठीक अच्छे, आरबीआई ओपन करे बट बैंकर टू बैंक हिसाब रे, को हिसाब रे बैंकर टू बैंक हिसाब रे, बुझिला। देन आरबीआई एक्ट्स एज एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑन मॉनिटरी एंड बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स, ठीक अच्छे, सेंट्रल बैंक। वेज एंड मीन्स एडवांस दिए गवर्नमेंट को दब, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आरबीआई जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या दब, कोरोना टाइम रे देइतला गवर्नमेंट, धर 500 टका अछि 700 टका उठिया चाहू, अलाउ। RBI floats loans and manages them on behalf of the government. Now this is correct, but this is as debt manager, as debt manager, बुझिला। तो 1 नंबर और 4 नंबर ठीक, बट नॉट एज सेंट्रल बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो खाली 2 3 ठीक अच्छे। है चलो खुशी शिखिला, आज नुआ पाठ पढ़ी गल ना नहीं, नुआ पाठ आज क्लास रू शिखिले कि शिखिले नहीं, फटाफट फोन। हो ताले बुझी हेलानी कौन हैला कौन नहीं मते कमेंट रे जणेबे। यूजेबिलिटी ऑफ द क्लास भल लागिला कि भल लागिलानी कौन लागिला कमेंट रे कहिबे। क्लास पर एटा तो लाइव चैट रे हमें कथा होचे, कमेंट रे जणेबे। सो लेट्स वाइंड अप। इकोनॉमिक्स हमें 8 घंटा क्लास कले, ता सहित किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कले। नाउ माय पार्ट इज ओवर, रेस्ट इज अप टू यू। You have to practice a lot, you have to read a lot, you have to re-practice, re-analyze, after exam देवे। Now wish you all the best from my side। 7 जून ने परीक्षा करके आसंतु, भल करके आसंतु, तापर देखा। Right, let's wind up this session। परीक्षा पर देखा। Best of luck, thank you।